पाएगा, क्योंकि इतना डाइवर्स देश है, इतनी वैरायटी है. स्टिल वी वर गुड टिल नाउ बिकॉज हम अंदर से वैसे हैं, हम अंदर से बुद्ध है, हम अंदर से महावीर है. तो वही हमारी आवाज़ है. एंड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग आवर वेज टू डू दिस. आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट टू मच डेमोक्रेसी. देन उस वक्त या अब हर वक्त यही होता है, कोई भी कुछ सवाल पूछने लगे तो उसको हम लेबल कर देते हैं. आपण त्याला म्हणतो हा देशद्रोही आहे, किंवा हा इथून फंडेड आहे, तो तिथून फंडेड आहे. मगाशी म्हणाली प्राची कुरेशी आहे, अजून काय, ह्याला काही अर्थच उरलेला नाही आहे. अशा वातावरणामध्ये त्यावेळी जी घटना घडली, मी ह्या आधीसुद्धा त्याविषयी उल्लेख केला आहे, की माझ्याच सोसायटीतला एक माणूस असं म्हणाला की अरे यांना गोळ्या का नाही घालत आपण, हे जे कोणी आंदोलन करत आहेत त्यांना. का गोळ्या घालायच्या, काय चाललं, म्हणजे व्हॉट इज रॉंग विथ अस. आणि मग हे सगळं आता परवाच मला वाटतं मी आणि आमचे प्रसाद सर बोलत होतो की पक्ष समाज हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा आपल्याकडे इतका दृढ होत चाललेला आहे की लोकच आता पक्षाचं काम करायला लागले स्वतःहूनच. सोसायटीचे सेक्रेटरी, सोसायटीचे अध्यक्ष हेच करायला लागलेत. अशा वेळी मग आपल्याला प्रो पीपल, म्हणजे आय एम अ प्रो पीपल फिल्म मेकर, आय एम नॉट अ अँटी गव्हर्नमेंट फिल्म मेकर. सो लोकांच्या बाजूचे जे म्हणणं आहे ते मांडत राहायला हवं असं मला वाटतं. ओके. किसी भी रिवॉल्यूशन में कार्टूनिस्ट का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, और कई बार वो मतलब टॉर्च बियरर भी रहे हैं. महाराष्ट्र को तो उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है कि यहाँ पे एक कार्टूनिस्ट ने जो पार्टी स्थापन की थी शिवसेना नाम की, उसी शिवसेना को हम देख रहे हैं कि आज कितनी वो बड़ी हो गई है. तो रचिता, वेब कॉमिक्स इस फॉर्मेट को आपने अपना वॉइस रेज करने के लिए कैसे चुना, जर्नी कैसे थी, हम जानना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी. Thank you, and thank you for having me in the journal. So I started webcomics accidentally. I don't know how to draw. If you've seen my comic, you will probably be able to tell that I can't draw for shit. I make stick figures for that reason. But I was very involved in social media. I was a social media officer for a couple of nonprofits. And then I really enjoyed the visual format. And I also spent way too much time on the internet when I was in college, like Tumblr, Imgur, Reddit. Dimag mera kharab hoke rakha hua tha already. And I also very much liked reading the news. So I thought, how can I combine all of these things in a visual medium? Because social media pe, visuals work better. And I was like, I can't draw. I don't have the patience to make films. So stick figure bana ke kar lete hain kuch. So that's how Sanitary Panel started. It's been 10 years now. And my first comic was about, anyone criticizing Modi gets thrown in jail. Funnily enough, it's still relevant 10 years later. But yeah, since then, there has been no looking back. अतुल जी, टिप्पणी तो बहुत फेमस है यहाँ पे. हम देख रहे थे कि लोगों में भी बहुत चर्चा है टिप्पणी की. और जब हम एक्सप्लोरिंग मीडिया टू रेज अ वॉइस कहते हैं तो अतुल जी के बारे में तो मीडिया ही उनके लिए कंटेंट है. इसी मीडिया को लेकर ये अपना, और मीडिया के खिलाफ भी हम कह सकते हैं कि अपना आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं. तो ये करने की ज़रूरत आपने महसूस क्यों की कि इसके बारे में भी बोलना चाहिए? मतलब मीडिया लोगों के बारे में बोलता है, आप मीडिया के बारे में बोलना आपने ज़रूरी क्यों समझा? उसकी आज के ज़माने में क्या मतलब अहमियत है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है कि मीडिया के बारे में हमें क्यों बात करनी चाहिए. एक तो पिछले 10 सालों में मीडिया के साथ बहुत सारी समस्याएं हमेशा से रही हैं इस देश में. लेकिन पिछले 10 सालों में जो मीडिया का चेहरा सामने आया है वो उसने उसके सीमा को बहुत आगे बढ़ा दिया है. जैसे मीडिया कभी इतने कम्युनल टर्म में बात नहीं करता था. 2 समुदायों के बीच दंगे फसाद भी हो जाए तो वो एक लाइन खींचता था कि 2 समुदायों के बीच, वो नाम नहीं देता था. ये मीडिया की अपनी एक गाइडलाइंस हुआ करती थी. ये सारी सीमाएं टूट गई 10 सालों में. उसी तरह से मीडिया की और भी बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई, जैसे कि हर चीज़ के लिए अपोजिशन से सवाल पूछना. भले ही आपके पास सरकार 10 साल से कोई और हो, लेकिन वो सवाल अपोजिशन से पूछेगा कि उस 10 साल के पीछे वाले जो 40 साल 50 साल है उसको वो सारी कहानियाँ याद हैं, लेकिन इन 10 सालों की बातें नहीं करनी है.
तो जब मीडिया ने ये भूमिका चुनी तो उस मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाने के लिए और साथ में एक मजबूरी, बड़ी समस्या ये भी थी कि ये मीडिया वो मीडिया था जो अपने ऊपर बात नहीं करता था, अपने लोगों पे। एक मीडिया दूसरे मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठाता था, उसकी कमियों के ऊपर बात नहीं करता था। तो एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी का अभाव था, जवाबदेही का अभाव है। ये सारी चीज़ों ने मिलकर एक तरह से न्यूज़ लॉन्ड्री को के आगे बढ़ने का या सामने आने का एक वो रखा रोड मैप। ये तो बात हुई कि क्यों मीडिया पर बात ज़रूरी है, और उस पर और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। फिर आता है कि आप किस फॉर्म में बात करेंगे। तो अल्टीमेटली ये मीडिया की अपनी से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतों से जुड़ा सवाल है कि आप किस फॉर्म में बात करेंगे। जैसे ये जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारी समस्याओं से जुड़ा है ये, तो उसमें एक हिस्सा हमारे अपने अंदर का है, एक हिस्सा हमारे बाहर का है, एक हिस्सा सरकारों से जुड़ा है, एक हिस्सा इसके कंज्यूमर से जुड़ा है, जो पाठक हैं इसके, जो दर्शक हैं इसके, जो श्रोता हैं इसके, मीडिया का कंज्यूम करने वाला हिस्सा, उससे भी जुड़ा है। तो इन तमाम समस्याओं में खुद से जूझते हुए आप देखते हैं कि यार ये लोग तो अब पढ़ते ही नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास एक डाटा आता है और उसमें वो बताता है कि दिन भर लोग वीडियो देखते हैं केवल, और वो वीडियो भी जो देखते हैं वो 30 सेकंड का वीडियो रील, उनका मतलब अटेंशन बहुत कम है। बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, तो कहिए, नहीं तो आगे बढ़िए। आप यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म की बात हो रही थी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर कुछ फॉसिल्स नितिन जैसे बैठे थे जो पता नहीं कौन से ज़माने की पत्रकारिता की बात कर रहे थे, बार बार उनको घसीट घसीट के हम लोग मॉडर्न पिला रहे थे, नहीं तुमको जेंजी बनना है। तो ये सारी समस्याओं में जब आप पढ़ नहीं रहे हैं तो हमने एक तरीका निकाला, या मैंने पर्सनली, कि भाई हम अपनी बात कैसे पहुँचा सकते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे रिजीम्स आई हैं, और उन रिजीम्स से निपटने के लिए जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट रहे हैं, जो वहाँ का कल्चरल तबका रहा है, जो वहाँ के साहित्यकार रहे हैं, जो वहाँ के सिविल सोसाइटी रहे, उसने बहुत सारे तरीके निकाले हैं। हमें मालूम है कि सीधी बात करने पर बहुत सारे जर्नलिस्टों को जेल भेजा गया, बहुत सारे राइटर्स को जेल भेजा गया, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो हम अपनी बात प्रतीकों में कहें, संकेतों में कहें, इशारों में कहें, उससे ये एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि हम क्या कह सकते हैं अपनी बात। और अपनी बात के आखिर में मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सारे मीडिया की बात कही कि इतने सारे टीवी चैनल हैं, इतने सारे अखबार हैं, पर मुझे लगता है कि जब आप इनको कैटेगराइज करने जाएंगे तो ये जो 350 चैनलों की बात आपने कही, 350 घंटे एक एक घंटे करके देखने की नौबत नहीं आएगी। एक ही घंटे में 350 चैनलों के कंटेंट का निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि आप चैनल दर चैनल बदल कर देख लीजिए, सब पे एक ही चीज़ आती है। और आजकल वो एक उसका कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी बैठती है रायसीना हिल्स पर, पता नहीं कहीं कोने में, वही कंट्रोल करती है, वही बताती है कि आपको क्या करना है, क्या चलाना है, वही वो लोग चलाते हैं। आप चैनल दर चैनल कोई भी दूसरी चीज़ आपको दिखेगी नहीं, शब्दशः एक एक चीज़ वही मिलेगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने सुना कि वहाँ से आता बिल्कुल है। तो वो कंटेंट वहाँ से आता है। तो इस चीज़ के मद्देनजर, जानते हैं लोग कहते हैं हम बहुत सारे सूचनाओं की बम्बार्डिंग में जी रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रहा है सूचनाओं के साथ, लेकिन ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी सूचनाओं के अभाव में जी रही है, सूचना की कमी के दौर में जी रही है। और वो वजह ये है कि ये जो सूचना है, इस सूचना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके पास जो सूचना आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये एक सबसे कमज़ोर तबके का जो आदमी है, जो अपने गांव में दूर दराज के बैठा है, उसको हम अगर ये नहीं समझा पाए, या उसके अंदर अपने दम पर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपना विधवा पेंशन, वो अपना वृद्धावस्था पेंशन, वो अपना राशन जैसी बेसिक चीज़ कहाँ से जाके ले सकता है। हम जब भी किसी से मिलते हैं एक रिपोर्टर, तो वो कहता है कि मेरे 5 साल से दौड़ रहा हूँ, मैं 3 साल से दौड़ रही हूँ। उसको अगर ये नहीं पता है कि, अब आपको लग सकता है कि ये तो सरकार की दिक्कत है, ये तो इसकी दिक्कत है, किसी की दिक्कत, ये अल्टीमेटली चीज़ें जाके जुड़ती हैं सूचना से, इन्फॉर्मेशन से, कि इन्फॉर्मेशन कितनी कमज़ोर है, कितनी ख़राब है हमारे यहाँ, कि एक आदमी जिसको पता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, लेकिन वो सरकारी अस्पताल से मुफ्त इलाज अवेल नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता नहीं है।
उसको पता नहीं है कि उसके वृद्धावस्था का पेंशन जो है या उसका जो विधवा पेंशन है जिस महिला का, वो कैसे मिल पाएगा, कौन सा एक दरवाज़ा होगा खटखटाने का, भटकाना ये वो सब। लेकिन अल्टीमेटली ये जुड़ा इन्फॉर्मेशन की कमी से है, सूचना के खराबी से है। ये ऐसा है कि आप समंदर के बीच में बैठे प्यासे बैठे हैं, तो बहुत सारी सूचनाएं हैं, बेमतलब के कूड़ा करकट खर पतवार सब आ रहा है आपके सामने, उसके बीच में आपको लगता है कि आप बहुत सूचना समृद्ध हैं, पर अल्टीमेटली आपके लिए वो सूचनाएं किसी काम की लेकिन नहीं। इलेक्शन के टाइम पे ये मशीनरी बहुत तेज काम करती है। हम किससे सुनते हैं कि पन्ना प्रमुख हमारे इतने हैं, वो गांव-गांव में जाकर अपना काम करते हैं, इतनी बैठकें होती है। क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी हमने सुना है कि संघ की 40,000 बैठकें हो गई और छोटे छोटे लोगों तक पहुंचा, इसलिए ये विक्ट्री हो गई है। तो ये काम उस लेवल पे क्यों नहीं होता है? इलेक्शन से जुड़ी बात के लिए आपने चूंकि जिक्र कर दिया है तो मैं उस पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूरी अब मुझे बोलना पड़ेगा। मैं यहाँ जो महाराष्ट्र पुणे की जनता बैठी है, इन सबको इतनी जागरूक जनता, इनके जागरूकता के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब मैं समझ नहीं पाता कि 6 महीने में ये जनता इतनी जागरूक है कि कैसे किसी को सर के बल उठा के खड़ा करके पलटती है। इस जागरूक जनता के लिए मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इतनी जागरूक अगर देश की जनता है तो इस देश में किसी तरह की तानाशाही और किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। आपण प्रसादकडे जाऊयात. प्रसाद, म्हणजे आत्ता अतुल जे सांगत होते की टाइम स्पॅन आपला कसा कमी झालेला आहे, आपला म्हणजे अगदी आपण 30 सेकंदाचा व्हिडिओसुद्धा कदाचित आपल्याला असं कधी एकदा फास्ट फॉरवर्ड करून म्हणजे 1x 2x पर्यंत आपल्या सवयी पोहोचलेल्या आहेत. अशा वेळी स्लो लाईफ जगण्याचा मंत्र घेऊन प्रसाद जगतो आहे आणि इंजिनिअरिंगची नोकरी सोडून त्यानं गावाकडे जाऊन एक वेगळा मार्ग निवडला. का म्हणजे तुझ्या बाबतीत तर असं म्हणावं लागेल की त्यानं मीडियाला तुझ्यापर्यंत यायला भाग पाडलं. म्हणजे तू स्वतः असं काम केलंस की ज्याच्यामुळं जो आपण ज्याला मेनस्ट्रीम मीडिया म्हणतो तो त्याच्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांमध्ये येऊन पण पोहोचला आणि बारसूचा विषय असेल किंवा इतर विषय त्या सगळ्यामध्ये पण त्यानं काम केलेलं आहे. तुझी जर्नी नेमकी या सगळ्यामध्ये कशी होती आणि तुला या मीडियाबद्दल, कन्व्हेन्शनल मीडियाबद्दलच्या तुझ्या कन्सेप्ट नेमक्या काय आहेत जाणून घ्यायला आवडेल. सगळ्यात आधी तर सांगेन, तुम्ही म्हणालात की पुण्यासारख्या शहरामध्ये पाटील नावाच्या माणसाने एक प्लॅटफॉर्म दिला आणि थैसर कोकणातलं गावडं येऊन जर बोलता तर खरं तर ही ताकद आहे आजच्या सोशल मीडियाची, की ही जी शहरं आहेत पुणे आणि मुंबई, ही ज्यांच्या जीवावर उभी आहेत त्या आजूबाजूच्या सह्याद्री आणि कोकणपट्ट्यातल्या गावातल्या लोकांना बोलण्याची आणि त्यांचा आवाज आज उभी करण्याची ताकद सोशल मीडियाने दिली. ज्यावेळेस मी कोकणामध्ये काम करायला चालू केलं 5-6 वर्षांपूर्वी इंजिनिअरिंग नंतर, खरं तर मी इंजिनिअरिंगच्या ज्या पिढीमधून मी इंजिनियर झालो तिथे खरं तर आता रोबोट्स आणि AI मुळे आता खरं तर माणसांचे जॉब जाण्याच्या भीती इथपर्यंत माणूस येऊन पोचला आहे. आणि त्यावेळेस आपण नुसते शिकत जातो आहे आणि आपण या शिक्षणातून आपल्या मूळ जीवनशैलीपासून, आपल्या मूळ गावांपासून आणि मातीपासून आपण वेगळे होतो आहेत याची जाणीव व्हायला लागली. आणि त्यानंतर गावामध्ये राहून काहीतरी काम करायची असं एक प्रेरणा निर्माण झाली. तर हे काम करत असताना आपल्याला सोशल मीडियाचाही वापर करता यायला हवा. आणि आजकाल सोशल मीडिया हा प्रत्येकाच्या हातात मोबाईलमधून आला आहे, तर तो त्याच्यातून गाव आणि इथलं इकॉलॉजिकल लिव्हिंग कसं मांडू शकतो ह्याचा अभ्यास करता आला. कारण दोन्हीकडची लाईफ बघितली होती. 4 वर्ष मराठवाड्यामध्ये काढली, त्यानिमित्तानं पुणं आणि औरंगाबाद, मुंबई सगळ्याच शहरांमध्ये फिरणं व्हायचं. तर कुठेतरी माणसं धावतात आहेत आणि का धावतात आहेत तर काही माहिती नाही आहे काय कमवण्यासाठी धावतात आहेत. आणि जे कमवण्यासाठी धावतात आहेत ते कोकणातली माणसं त्याला सुशेगातपणा म्हणतात, इकॉनॉमिक्स ऑफ हॅपीनेस म्हणूया आपण त्याला. तर आनंदासाठी धावतो आहोत आपण, पण तोही आनंद इथे काही विकत घ्यावा लागतो आहे आणि तो मटेरियलिस्टिक आनंद झालेला आहे. म्हणजे मी नेहमी म्हणतो की आत्ता हिवाळ्यामध्ये माझ्या घराकडे माझ्या दिवसाची सुरुवात ही मलबार व्हिस्लिंग थ्रश नावाच्या एका पक्षाच्या सुमधुर गाण्याने होते, ना की कुठल्या हॉर्नने होते. सो ही असं प्रिव्हिलेज लाईफ आहे आपल्याकडे गावांमध्ये. आणि आजही माझ्या या गावांमध्ये 6 ऋतूंचे 6 सोहळे आम्ही अनुभवतो. इंडियामध्ये 6 सीझन्स असतात, तर ते कदाचित माहितीही नसतील शहरातल्या लोकांना. तर तितकं मायनर हे सगळं सीझनमधलं चेंजेस कळणं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अनुभवण्यासाठी म्हणून गावामध्ये गेल्याच्या नंतर त्या कशा मांडता याव्यात ह्याच्यासाठी आम्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरायला चालू केला. पण ह्या सगळ्या काळामध्ये दुसरीकडे कोकणाचं शहरीकरण आणि गावांचं शहरीकरण म्हणजे विकास अशा पद्धतीच्या संकल्पना यायला लागल्या
की तुमचा विकास झालेला नाही आहे, तुम्ही मागासलेले आहात. तर ज्यावेळेस शहरांकडे बघतो, इथल्या माणसांच्या जगण्याकडे बघतो, त्यावेळेस असं वाटतं की अरे तो माणूस मागास कसा, जो विदाऊट इलेक्ट्रिसिटी फक्त ग्रॅव्हिटीच्या तळीच्या पाण्यावरती स्वतःच्या सुपारीच्या बागेला पाणी घालतो, तो माणूस खरं क्लायमेट फ्रेंडली जीवन जगतो, ज्याचा अभ्यास खरं तर आता करण्याची आपल्याला गरज आहे. कारण आपण आता ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या जमान्यामध्ये, कार्बन इमिशनच्या जमान्यामध्ये वावरतो आहोत. तर ज्या देशाकडे क्लायमेट फ्रेंडली लिव्हिंगची टेक्नॉलॉजी आहे, मी म्हणेन टेक्नॉलॉजी, कारण जिथे लाटेवरती पाणी काढलं जातं ती टेक्नॉलॉजी आहे, आणि त्याच्यासाठी वापरलं जाणारं लाकूडसुद्धा हे नॅचरली वॉटरप्रूफ असलेलं लाकूड असतं, भेडले माडाचं किंवा शिवणीचं लाकूड. तर ह्या अशा रुरल टेक्नॉलॉजीला समोर आणण्यासाठी आणि मग तुमचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर चालू केला. आणि ह्या गेल्या काही 5-6 वर्षांमध्ये कोकण ही आता सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मिळाली म्हणून तिला सगळ्या लोकांनी आत्ता जी काही कापायला घेतलेली आहे त्याच्याविरुद्धसुद्धा आवाज उभा करण्यासाठी याची मदत झाली. पण हे सगळं करताना कुठेतरी कन्स्ट्रक्टिव्ह काम उभं करणं हे मात्र मनामध्ये नेहमी आहे आणि ते राहतं आहे. कारण नेहमी प्रश्न हा असतो की तुम्हाला विकास नको का? तुम्हाला जर विकास नको का, तर आम्ही विकसित आहोत, आदिवासी विकसित आहेत, कोकणातली माणसं विकसित आहेत, पण त्याला विकासाला, त्याला एक जो इकॉलॉजिकल अँगल आहे, जो त्या विकासाला एक सस्टेनेबिलिटीचा जो अँगल आहे, तो आज आपल्या गावातल्याच लोकांनी समोर येऊन सांगणं गरजेचं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी एक्सप्लोअर करताना बारसू रिफायनरी असेल, सत्यजितनं गेल्या जे 5-6 वर्षांमध्ये जे काम उभं केलं आहे नाणार आणि बारसूमध्ये, त्या कामाला आवाज देणं, कळणे मायनिंगच्या कामाला आवाज देणं, आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन, गाडगीळ येऊन गेले कोकणामध्ये आणि वेस्टर्न घाट्स इको सेन्सिटिव्हचा रिपोर्ट देऊन गेले. पण लोकांपर्यंत इको सेन्सिटिव्ह म्हणजे भीती, इको सेन्सिटिव्ह म्हणजे तुम्हाला फॉरेस्ट करणार गावाचं आणि सगळं तुम्हाला काही करता येणार नाही, अशा पद्धतीने पोचला. तर तो इको सेन्सिटिव्ह काय आहे आणि कोकण खरंच इको सेन्सिटिव्ह झोन आहे, तो आपल्या पूर्वजांनी कसं ठेवावा याची टेक्निक, याची लाईफस्टाईल पण आपल्याला दिली होती. तर ती मांडण्याचा हा एकंदर माझा प्रवास सुरू आहे. तुझ्या जर्नीतले इतर पण काही प्रश्न खूप आहेत इंटरेस्टिंग, त्याच्याकडे आपण येऊच. पण आता तू जे सांगतोय त्याच्यातनं मला हे जाणवते की कोकणी माणूस जो आहे म्हणजे तो खरा सेपियन, की ज्याला कळतं आपल्या अवतीभोवतीचं जगणं कसं समृद्ध करता येईल. म्हणजे आपण इंडिव्हिज्युअल विजडमची जेव्हा गोष्ट करतो तेव्हा तो जुन्या माणसांचा अधिक होता की काय, आणि आपला कमी होत चाललेला आहे. आपल्याला कलेक्टिव्ह विजडम आपला खूप वाढला आहे. आपण यानं शोधली आहे, चंद्रावरती जातोय, अजून काय काय करतोय, पण आपल्या जगण्याला आपण किती समृद्ध करतोय, आपल्या अवतीभोवतीचं ज्ञान आपल्याला खरोच तितकं आहे का जितकं आपल्या पूर्वजांना होतं, हा पण त्याच्यातला म्हणजे विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. अभी दिव्या के पास आते हैं. दिव्या, सिंस यू आर वर्किंग इन that area which is considered as a taboo area, the caste discrimination is the thing many people will not understand, many people will think that this thing does not exist, and you are working in that sector or that area. So I find it very interesting that you are saying there is mental health issue in the caste discrimination. So this is very matlab, I'm very eager to know how do you relate it and how do you find such experiences? Thank you for asking the question. Jai Bhim, everyone. I'll speak in Jai Bhim. I'll speak in English. My mother tongue is Telugu. I wish I could speak in Telugu because everyone's speaking in Marathi, which sounds so beautiful. Telugu sounds better, but it's okay. We'll not get there. That will be debatable issue. We are talking in Pune. Okay, sorry. I'll take it back. So it's an interesting question, actually. So I also do trainings for young people, and I do this very little 2-minute activity with everyone, which I want to do with all of you also. I'm really not into these panel discussions like talk and all. So if you could just take out your phones, if you have a Google search on your phone, I want you all to do a image search, type Brahmin women on your Google search. And when you're doing that, just go to the images, like type Brahmin women and go to the images that show up on your phone. Please do. And please, like it's interesting actually. As you are scrolling when you type Brahmin women, what are the images that are showing up on the first set of images? Pretty sure it would be someone getting married, someone wearing Kanjivaram sarees, or like someone with certain color, like certain type of skin color, with certain type of clothing, or certain
quote unquote traditional or ritual way of showing women. Now I want you all to search for Dalit women on Google again. So when you are typing Dalit women, what are the things that are showing up in your top 5 search bar? Are there women just laughing, or are these the images from a news story? It would be mostly 10 by 10 images from a news story of women protesting, of women crying, or women subjected to violence, or women just fighting, right? But are these the stories of Dalit women? Are these the only stories of Dalit women? Or are these the only images of Dalit women, right? And that is where the question of media, that is where the question of content, and that's where the question of mental health comes into picture, right? I was a media practitioner. I think I'm still a media practitioner as well. So it's fun for me to look at how media also informs our ways of seeing and our ways of understanding world, right? And then how it manifests into our everyday life in itself. Like now, suppose, like again, I come from this small town called Ongole in coastal Andhra. And as a young woman, if this is the images that I am subjected to growing up, and I'm seeing that people of this community are always fighting, are not wearing Kanjivaram saris, or not smiling, laughing, you know, are constantly fighting, what is it telling me? Like, what is the story that it is telling me as a, like, even if I'm a 15-year-old teenager, what is the story that is being informed to me? It is telling me that I can never be happy, I can never wear certain kind of clothes, or I can never be certain way until and unless I'm fighting, right? And that is again why I started taking up media seriously, in terms of the fact that we all talk about media being democratic, or social media giving a voice, and like, you know, it's being democratic. It's not, to be very honest, it's not. Like, social media being democracy is also a farce. We'll not get there. I think that's a different panel altogether. But the content that's being produced on social media in itself is so biased, right? And the images that are produced on social media in itself are so biased. And that is also where most of young people are at. And these are like people who are in cities. Now I'm gonna go back to people who are in rural areas, where caste discrimination is something that you face, not just rural areas, in cities also, but like caste discrimination is something that's a everyday reality for us. Like when we see that in our own households, domestic workers are kept separate utensils. Why is your domestic worker drinking water from a steel glass and not from the same glass that you drink? Or like when we don't question why is your domestic worker sitting on the floor and not on the stairs? Or I just saw news that in Pune, our society has a separate elevator for workers, whereas the residents can have to go in a different elevator. And if the worker takes the elevator off the residents, they have to pay 1,000 rupees fine. So what is this informing me as a young person, right? This is telling me that people like me cannot exist in this world without fighting. It is telling me that people like me have to always be, either be extremely brilliant to be invited to a panel like this, for example, or to have to be extremely like struggling to be discussed at all. What if I just want to exist? What if I'm just a young girl who wants to eat waffles? Like, you know, where is my story going to be told in a movie? Like, because this is a panel that consists of so many different practitioners. Since, like, I don't know, I mean, Bollywood or Marathi movies or Telugu movies, how many surnames of film actors do we have as Sharmas, Malhotras, or like Kulkarnis, or whatever acres? I don't know about Marathi surnames most. But like, you know, how many surnames do we see of like Kamble's, or surnames of people who come from certain communities, right? We do not. It becomes a, you'll be tagged as a, oh, you are a Dalit filmmaker, you're a Bahujan filmmaker, you are this, you are that. You are not a filmmaker at the end. Like, so why I'm discussing all these things is also because all of this also makes one think about what their image is like. One of the references that I really love to talk about mental health is the film Fandry. Since this is Maharashtra, I think I can refer this. It beautifully like showcases what are the effects of media on this child
who is going through. So there is this one particular scene in Fandry where Jabya is standing in front of a shop to buy a jeans pant. He wants to buy a jeans pant very desperately. Jabya is the protagonist of the film, for those of you who don't know. He's a young kid who wanted to buy a new clothing and he does not have money for it, so he's taken up a part-time job. And then he's standing in front of this store. And then you see this image of a very North Indian looking fair-skinned man with certain kind of nose and like, you know, certain kind of thing. And the screen is just showing that person, Jabya just staring at that. And the next scene is his dreams being smashed because of whatever. And the movie ends with Jabya throwing a stone at the audience, saying that this is what the society is doing to young kids like me. You are making me think about my identity in a certain way. Similarly, through my work, I've been working on caste and mental health for the past 6.5, 7 years. I have realized that the topic of mental health in itself is not there. Like again, where I come from, when I have to talk about mansik swastha or mental health, we do not have this language of therapy, counseling. Nobody knows. You either are mad, like पागल हो आप, नहीं तो आप ठीक हो, नॉर्मल इंसान हो. तो अगर आपको कुछ हुआ है दिमाग में, तो आपकी सटका हुआ है, स्क्रू लूज हुआ है, तो आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो आपको या फिर यू आर अ नॉर्मल पर्सन. But then this is where the topic of what happens to people who are already dismissed based on the caste discrimination are also put together. Like there is issue of mental health and there is issue of caste discrimination. Then वो लोग क्या है? वो लोग पागल है कि normal है? तो वो that conversation has been like there for a long time, and then also what students face at universities. Like we have been discussing about the institutional murders that have happened. Again, like my complaint to journalists here in the room is that please write it as institutional murders, because these are not suicides. Suicides are, again, this is also again how media induces language, right? Of like how mental health is stigmatized in a way that a student is vocally saying that they've been discriminated based on their caste, hence they are taking their life, are dying by suicide. But then media is not acknowledging that part, right? So for me, what triggered was, of course, the death of Rohit Vemula. And then like there is this one small example I'd like to give. Like when pandemic just happened, when the lockdown just happened, there was death of a very famous Bollywood actor. Or the death became like so huge in the media, right? And the Bollywood actor comes from an upper caste specific Rajput community, right? And then when this death happened, there were 9 p.m. prime time shows talking about how Rajputs are not covered enough to take their life. That this is an act of nepotism, that is why this person is dead. This is an institutional murder kind of way. Okay. The narrative was built on Twitter. Similarly, in that same time, there were also deaths that happened of students in IITs, students in Tamil Nadu, students in many, many universities. And there were shows like, and articles in the mainstream media talking about how this is an issue of depression and mental health. So again, the conversation becomes a thing about mental illness when it comes to the death of a student coming from Dalit Bahujan community or Adivasi community, but it becomes an issue of structural issue when it comes to the death of an upper caste student or an upper caste person. So it's not like कि हमारे society में लोगों को पता नहीं कि mental health क्या है और caste की वजह से mental health कैसे affect करता है, सबको पता है. The only issue is that the moment you acknowledge that caste discrimination impacts someone's mental health, you are also acknowledging that caste is a shit thing to practice. But we don't want to acknowledge that, because the moment we acknowledge this, that whatever system that we have built, the vertical system, will collapse. But to maintain the status quo, we'll act like, oh, aisa nahi hota. So since then, I've decided that this needs to be addressed, and I have used these social media platforms to advocate for caste and mental health. That was 6 years ago, but now we have built in a way that we run a course on anti-caste mental health practices, and we have worked with so many mental health practitioners and young people, and we come across stories of people, young people, which are really, really like
of their everyday resistance practices. Like existing in a university space without the tag of you being a student, Dalit Bahujan Adivasi student, or just a student, you are just a researcher. Just like how you could be a researcher, I could be a researcher. I'm not a Bahujan researcher, I'm a researcher. Or, you know, things just existing in spaces like that, these have been wins for so many students. And this specific, I would not have been able to do this without the help of my media training or how to use social media for the benefit, though there is a lot of misinformation on this, but I think media does come in handy in a way that you can actually sometimes use it for advocacy also. But how difficult it is to use digital platforms for this kind of work, मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल हेल्थ, तो इंस्टाग्राम पर आपको इसका जो अल्गोरिदम है वो कैसे मतलब ट्रीट करता है, आपको व्यूअर्स तक पहुंचने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? It is definitely very difficult because you are like, first of all, एक तो आप लोग को attacks बहुत मिलेंगे. People will try to attack you in a way that, I mean, people who don't believe that caste is a thing, or people who don't want to shatter or annihilate caste, or people who see you as a threat, they will definitely attack you. But I have seen, by my experience, I have seen that social media has allowed me in a way that you can put your story out there. Algorithm comes later, but I also started using pop culture a lot. So because again, I was a media and cultural studies student, I use a lot of references from pop culture, cinema, and that has helped me a lot to reach young people. Also, I think we have to play our own way on how to, again, algorithm is something that I think all of us have to fight with, but there is always a way is what. Like I always go back to, if a 17-year-old Savitribai Phule could open a school, and if Babasaheb Ambedkar could open a newspaper in those times, we could definitely use internet for our own benefit, regardless of all the things that are there. Prashant, I want to add something here. Yes. It is completely different, but since we are discussing caste, and since we rarely discuss caste on open platforms, and that's a fact. As a filmmaker, I want to share one of my experiences. Okay. I was introduced, as I am known for 3 films, Too Much Democracy, Jamura and Shahu Chhatrapati. Shahu Chhatrapati is a biographical film of Chhatrapati Shahu Maharaj of Kolhapur, who fought for the equality, who fought for the Dalits of this state, his state then, now it's Maharashtra. We announced that biopic, and I'll tell you how it works. So before announcing that film, 2 leading production house chiefs of Maharashtra, both of them had asked me, Varun, kuch kahani ho to batana, we want to work with you. Oh. And then I went, I have this story. Ye nahi yaar, dusri koi bhi chalegi. I was like, why? Shahu is a little tough subject to touch. Tough subject. That's the reality. I am not Dalit, but I am untouchable right now in industry because I am working on Shahu Chhatrapati. And that's my experience. I have narrated the story to one very big person of the industry. He heard the whole story. It's a wonderful story, Varun. But we can't do it. I was like, why? नाही मग त्याच्यात ते वेदोक्तचं म्हटलं मग म्हणजे तुमचं म्हणणं मी वेदोक्त दाखवू नये शाहू छत्रपती, मग काय दाखवायचं मी? फक्त कुस्त्या आणि पैलवान? मग तुम्हाला तेवढेच शाहू हवेत? आपला प्रॉब्लेम हा आहे. म्हणजे आता ही सांगत असताना मला हे कळतंय, हिने ज्यावेळी गुगल सर्च सांगितलं ना, मी गेले सुंदर फिल्म लिहून झाली आहे आमची. प्रत्येक वेळी एकच गोष्ट होते, नाही आम्ही ना, मला एका मोठ्या प्रोडक्शन हाऊसच्या लीड झालं, आम्ही ना 2 वेळा ह्या विषयाला हात लावून खाली ठेवलाय रे. चांगली गोष्ट आहे म्हटलं, आम्ही नाही ठेवणार खाली, आम्ही करणार पूर्ण. आता ह्याच्यात माझ्या आडनावाचा संबंध नाही आहे प्रशांत, ह्याच्यात त्या माइंडसेटचाच संबंध आहे की भाई शाहूला हात लावत आहे. नाव इमॅजिन त्यांना ते करताना काय झालं असेल, आम्हाला दाखवताना अजूनही झगडायला लागतं.
आणि मला तर वाटतं की म्हणजे मार्केटिंगच्या नावाखाली तुम्ही कधी कधी तुमची ती सुप्रमसी धोक्यात येऊ देत नाही. हो. कारण फॅन्ड्री चालतोच ना, फॅन्ड्री एक्झॅक्टली डोक्यावर घेतात लोक. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली म्हणजे, नाही पण आता बघ गंमत काय आहे, आता हे मी बोललो तर कदाचित अनेकांना आवडणार नाही, पण लेट मी टेक दिस चान्स टू से दिस. देर इज अ मेंटॅलिटी सिन्स शी मेन्शन्ड अ फॅन्ड्री, आणि ही आहे इंडस्ट्रीमध्ये मेंटॅलिटी. फॅन्ड्री बनवा, तो दलितांनी दलितांसाठी केलेला दलितांचा चित्रपट आहे. शाहू का नाही बनवू शकत? कारण तो एका मराठा राजावर केलेला, वरुण सुखराज नावाच्या माणसाने केलेला दलितांविषयीचा चित्रपट आहे. तो कसा चालेल? हो. त्याच्यामध्ये पण मार्केट इक्वेशन्स येतात प्रशांत, हा प्रॉब्लेम आहे. कुठली गोष्ट आपल्याला विकता येईल. विकता येईल. शाहू छत्रपती विकणं जड आहे, त्याचं कारण ह्यांना ते डायजेस्ट करणं जड आहे. ह्यांना ते आत्ता हे डायजेस्ट करणं आणि आत्ता हे आपण दाखवणं या काळामध्ये की छत्रपती घराण्यातल्या एका माणसानी ह्या पद्धतीने काम केलेलं आहे या महाराष्ट्रामध्ये. छत्रपती घरातल्या माणसांनी ह्या महाराष्ट्रात इक्वॅलिटीसाठी एवढा मोठा झगडा दिलेला आहे, आंबेडकरांसारख्या इतक्या ब्रिलियंट स्टुडंटला सपोर्ट केलेला आहे. हे ह्यांना दाखवायची आज भीती वाटते. म्हणजे हे किती चेंज्ड नुआन्सेस आहेत हे लक्षात घे. म्हणजे आत्ता प्रॉब्लेम त्यांना हा नाही आहे की दलित दलितांचं करतात, त्यांना प्रॉब्लेम हा एखादा सवर्ण येऊन ह्यांच्यासाठी परत उभा राहायला नको जसा त्यावेळी उभा राहिला. अँड दॅट्स दी मेजर डेंजर आय सी राईट नाव. आणि हे आता सगळीकडे पसरायला लागलं आहे. आणि हे मधल्या काळात लाईक शी सेड, युझिंग सोशल मीडिया फॉर धिस इज वन साईड ऑफ इट, बट युझिंग सोशल मीडिया फॉर दॅट इज द डार्कर अँड बिगर साईड ऑफ इट. You go by the algorithm, you will get it. Once you watch one thing, the Rajputs, the Maratha, आपलं रक्त असं, आपलं हे तसं, ह्याच्यानी हे जास्त ॲम्प्लिफाय होतंय आत्ता. अँड दॅट्स द प्रॉब्लेम अँड नोबडी इज ट्राईंग टू ॲड्रेस दॅट प्रॉब्लेम. कसला फुकाचा जातीचा अभिमान आत्ताच्या काळात यायला लागला. ह्या आत्ताच्या मुलांना खरंच सांगतो, 16-17 वर्षाच्या मुलांमध्ये इतका जातीचा अभिमान आजकाल यायला लागला आहे. आमच्या काळात आम्हाला शाळेत कळायचं नाही रे खरंच ह्याची जात कुठली आणि त्याची नव्हतं कळायचं. उगाच काय, मग त्यावेळची ती नशीब होतं आमचं तसं चांगलं. पण या आय वॉन्टेड टू ॲड टू दिस दॅट कास्ट इज सो डीप इन अस दॅट इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर अ पर्सन हू बॉर्न इन दॅट कास्ट, इट इज फॉर अ पर्सन हू वॉन्ट्स टू टेल अ स्टोरी अबाउट इट. अँड वन मोर कमेंट, आय जस्ट ॲड वन मोर कमेंट. अँड इट हॅपन्ड बाय अ व्हेरी रिनाउंड पर्सनॅलिटी इन महाराष्ट्र. तू कशाला पडतोस ह्या विषयात? I was like, हो ना, त्याला पण कशाला पडायला पाहिजे होतं त्या विषयात, तुम्ही असेच राहा. सो या आय जस्ट वॉन्टेड टू ॲड दॅट येस वी शूड टॉक अ लॉट अबाउट कास्ट्स, वी शूड accept it that it is there, otherwise we won't be able to cure this disease. ज्या कन्व्हिक्शन वरून सांगतोय ते बघितल्यानंतर त्याच्या चित्रपटाची उत्सुकता आता आपल्या सगळ्यांनाच असेल. आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग अबाउट द, क्योंकि इससे पहले वाले भी पैनल में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर अभी इसमें दिव्या ने एक बहुत सेंसिटिव इशू की तरफ इशारा किया कि आप गूगल करिए, गूगल से क्या आपको डाटा मिल रहा है. मैं मीडिया के नज़रिए से इसको थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया की बहुत सारी दिक्कतों की हमने बात की, बाहरी हैं, इंटरनल हैं, उसमें मीडिया के न्यूज़ रूम का जो स्ट्रक्चर है, वो जो कहानियाँ जिसकी शिकायत दिव्या कर रही हैं कि मीडिया से मेरी शिकायत है, वो शिकायत इसलिए है क्योंकि मीडिया के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह की डाइवर्सिटी का अभाव है. और वहाँ पर वो जो कहानियाँ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कहानियाँ कह कौन रहा है, कहाँ से वो कहानियाँ आ रही है, वो रिपोर्ट जो आ रही है किसकी तरफ से आ रही है, उसको लिख कौन रहा है, उसका एडिटर कौन है, उसको पास कौन कर रहा है. न्यूज़ लॉन्ड्री के जरिए हमने 2017 में जब पहली बार बहुत छोटे स्तर पे मैंने एक शुरू किया था कि देखते हैं कि जो एडिटोरियल पन्ने होते हैं, एडिटोरियल पेजेस होते हैं, मेजर 7-8 हिंदी न्यूज़पेपर और 5-6 इंग्लिश के न्यूज़पेपर, उसमें वो कौन लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, ओपिनियन ऑप-एड लिख रहे हैं, ओपिनियन लिख रहे हैं और ये वो. और धीरे धीरे वहाँ से शुरू किया हमने. हर महीने हम एक निकालते थे पूरे महीने का, बहुत मैनुअल डाटा उसमें होता था, एक एक आर्टिकल देखना लिखना. आप विश्वास नहीं करेंगे उसमें जेंडर के स्तर पर कितना डिस्क्रिमिनेशन था. उसमें महिलाओं की कोई बहुत लिमिटेड से हुआ करती थी, और वो अंग्रेज़ी हिंदी हर जगह प्रॉब्लम है. उसमें दलित के नाम पर मतलब 1% से भी कम, 200 में एक दलित, मतलब आधा % जैसी स्थिति होती थी. ओबीसी नहीं होते उसमें होते थे. फिर धीरे धीरे हमने इसको शुरू किया और
एक एनुअल रिपोर्ट निकालना शुरू किया हमने ऑक्सफैम इंडिया के साथ मिलके, जेंडर डाइवर्सिटी और कास्ट की डाइवर्सिटी पे न्यूज़ रूम के अंदर की है। भारत के जो न्यूज़ रूम है उनकी स्थिति क्या है, और आप विश्वास नहीं करेंगे 90%, 95%, 99, 98, 99% तक लोग अपर कास्ट सवर्न क्लास के लोग हैं वहाँ पर बैठे, वही सारे डिसीजन ले रहे हैं, वही लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये वो। और ये चीज़ इसलिए उसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी दिखती है हमें जब थोड़ा सा और उसको बारीकी से देखें। तो इस देश में के जो प्रीमियर मीडिया इंस्टीट्यूट हैं, कम से कम जो जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित करती है, आप वहाँ पर रिजर्वेशन भी है, वहाँ पर दलित और इस तरह के छात्र भी का भी एडमिशन होता है। लंबे समय से वो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो वहाँ से वो छात्र भी निकलते ही होंगे, वो कहीं ना कहीं इसी फील्ड में जाते होंगे, फिर वो कहाँ चले जाते हैं? ऐसा क्यों है कि आपके टॉप पे जो एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं और ब्यूरो चीफ हैं, उन तमाम पोजीशंस पे ये लोग गायब हैं? इसका मतलब है कि न्यूज़ रूम का जो अपना स्ट्रक्चर है वो खुद अपने आप में बहुत कास्टिस्ट है, और वो इस वजह से वो कहानियाँ सामने नहीं आने देता जिन कहानियों को कहने के लिए एक विशेष किस्म की, एक सर्टेन काइंड ऑफ सेंसिटिविटी चाहिए कहने के लिए, है ना। वो एक बहुत क्लीशे हो चुका है, बार बार कहा जाता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो कोई जाके पाँव न फटे बिवाई सो का जाने पीर पर आई। तो जो कहानियाँ जिनके उससे जुड़ी हुई हैं, इशू से जुड़ी हुई हैं, जब वो उसको देखना महसूस करता है जिसने उसने लिखी होगी, और एक आदमी जो दूर से बैठ के, जैसे अभी वो इसके पहले वाले पैनल में बात हो रही थी ना कि वो बाहर से गया वर्ल्ड व्यू लेके कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट करने, जो जर्नलिस्ट, वो बाहर के व्यू से इतना वो है कि ओवरवेल्म्ड है, उसी कहानी को उसी तरह से कह देता है, जो एक उसका क्या टर्की का क्या रोल है यूक्रेन में और सीरिया में, और ईरान का क्या रोल है, वो सब बता देगा, वो लोकल नुआंसेस को उसकी जानकारी नहीं होती। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो कहानियाँ कौन कह रहा है। ये समस्या हमारे न्यूज़ रूम की है, मीडिया की है, और इससे बड़ा अंतर पड़ा जब हम लोगों ने निकालना शुरू किया। आप देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको लिया सुओ मोटो, बहुत सारे। अब देखिए जेंडर का रेशियो उसमें बहुत चेंज हुआ है, एटलीस्ट ओपिनियन और उसमें ऑपेड पेजेस पे, और बाकी धीरे धीरे कास्ट को लेके अभी भी दिक्कतें हैं, लेकिन ये है कि उसमें एक पुशबैक के तौर पर इस चीज़ ने काम किया, तो हमें लगातार उस पुशबैक पे काम करते रहने की ज़रूरत है। ये मैं मीडिया के नज़रिए से कह रहा हूँ, बाकी तो फिल्म और इस इंडस्ट्री की जो हमारा मतलब टॉपिक है एक्सप्लोरिंग मीडिया, क्या ये जो नए नए तरीके हैं वो इसमें मददगार साबित हो सकते हैं कि ये थोड़ा जो मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर हम नहीं बदल पाए, तो इससे थोड़ा वो इक्वलिटी हो सकती है? मतलब इस डिजिटल रिवोल्यूशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए ये आज की तारीख में आप बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, खासकर एट्रॉसिटी की जो कहानियाँ हैं, आप उनको देखें तो वो कोई रिपोर्टर ग्राउंड से ब्रेक नहीं कर रहा है। बहुत सारी, मैं सारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कहानियों का आज ब्रेक होने का जो ज़रिया है, जो मंच है, वो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, लोगों के पर्सनल हैंडल्स, और वे वहाँ से स्टोरीज ब्रेक हो रही हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि डिजिटाइजेशन ने, इंटरनेट ने मीडिया के लैंडस्केप को बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया है, बहुत सारे लोगों को वॉइस दी है, बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को जिनके पास कोई अपनी बात कहने का जरिया नहीं था, वो जिनकी बात में कह रहा था कि सूचनाओं का बहुत अभाव उनको, एटलीस्ट अब उनको पता है कि वो अपनी बात कहीं कह सकते हैं, है ना। तो वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एम्पावर किया है। अब उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, जो इसके पहले बहुत सारे उसमें बात हुई है कि भाई उसमें AI जैसी चीज़ें आ रही हैं, फेक न्यूज़ जैसी चीज़ें आ रही हैं, वो समस्याएं हैं। वो एक दूसरे तरह की समस्या है, वो इंटरनेट लिटरेसी से जुड़ी समस्या है, वो उसके लिए अलग स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। पर मोटी मोटा ओवरऑल उस पर देखें हम तो डिजिटलाइजेशन ने और इंटरनेट ने मीडिया को, खासकर जर्नलिज्म को, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज किया है। आप अभी जो ये बात कर रहे थे तभी मुझे इसी शहर की दो घटनाएं याद आई, एक पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट और पूजा खेड़कर का जो केस हुआ था। ये दोनों जो चीज़ें हैं मतलब पिछले 6 महीने में हुई है, और दोनों ही सोशल मीडिया आउटरीच की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया को उनकी दखल देनी पड़ी थी, और दोनों का जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत बड़ा था। मतलब पूजा खेड़कर केस में यूपीएससी को अपना सब पैनल और स्ट्रक्चर बदलना पड़ा था, तो ये बहुत बड़ी बात कहनी पड़ेगी। रचिता, वेब कॉमिक्स के बारे में जब हम कह रहे हैं तो कार्टूनिस्ट का और रिवोल्यूशन का जो नाता है
वो आपके बारे में भी मतलब नहीं छूटा है, आपके ऊपर भी एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है। क्या वो मतलब केस था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और कॉमिक को लेकर अपनी बात कहना, ये प्रोसेस जो होता है आपका, मतलब उस क्रिएटिविटी को सामने लाने का, उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें। First, I want to thank Divya for everything that she said. I think it's very important. I also think that Dalit people don't need Savarna people to tell their stories. Dalit people can tell the stories themselves. As Savarna people, it's our responsibility to give them whatever backing and platform we have. I think that's how we should move forward. And yeah, there is no comparison in the victimhood of Dalit people and Savarna people when they're trying to cover stories. That being said, I have had a contempt of court against 3 of my comics since December 2020. I can't talk much about it because it's ongoing. I'll just say that it's been going on for 4 years now. And there hasn't been a single hearing, so I'm still waiting on that. In terms of satire and political cartooning, I think political cartooning globally and even in history has been a very important tool of bringing people in to the conversation. Having something simple like a visual, like a drawing with a joke or with a snarky comment or with like a sharp observation often draws people into something that they might not necessarily engage with because it has too many words or it has too much jargon. I think satire and political comics are unique in the sense that they are able to hold a mirror up to authority while also not isolating people from the issue. For example, I try to use as few jargony words as I can when I'm writing a comic, and I think that's important because I myself get very intimidated by op-eds that go on, and I get scared to read them. And I think because when I was young, I had that, impulse to not read a really long article, but to see a meme on it. I thought that, okay, I should read the article, and then I should try to distill it in some way so that people at least get an interest in the article, and then if they choose, they can go read it. And a similar thing with like research reports. My favorite thing to do is to take a heavy research paper and then try to find ways to get people to be interested in them. So how can you make this 10-page report into something that someone goes like, huh, that's an interesting thing, I want to go read more about it. So I think that's also something that comics can do. I also think that with my black and white stick figure thing, because there is a lot of visual information on Instagram, you see a lot of like really beautiful art. I mean, I'm jealous, I wish I could draw that well, but you see a lot of beautiful art and beautiful photos, like everything is very rich and full of colors. And so with a black and white stick figure, very few words, it often gives a mental break as well. It's like, I am not intimidated by this visual. Let me give a second to read it. Let me pause here and have a look. So even though I have somewhat learned to draw to save my life, I still stick to the black and white stick figure. And yeah, I think like throughout history, editorial comics have been extremely important. And when those in authority come after political cartoonists, it's like a warning bell for democracy. Because those who are afraid to be made fun of need to be made fun of the most. And we need to keep an eye out for figures of authority coming after satirists, because they get scared. They're like, oh shit, they are making me seem like I am a human and I am a mortal, which I am. So they don't want to be shown as human. They want to be shown like this godlike figure. And I think satirists, whether it's stand-up comics or political cartoonists, bring them back to ground like, bhai, nahi, baith jao aap. You are one of us, you work for us. So I think that's why satire is important. थोडंसं वेळेची मर्यादा होत चालली, त्यामुळे आपण आता शेवटाकडे येतोय. प्रसाद, तुझ्याकडे म्हणजे कोकणी रान माणूस म्हणून तू आता एक स्वतःची ओळख निर्माण केली, पण ज्यावेळी हे ठरवलं होतं
की आपण हे करायचं आहे, त्यावेळी त्याला रिस्पॉन्स कसा येईल, आपण जे करतोय त्याला लोक ॲप्रिशिएट करतील का, याची थोडी भीती होती का? आणि जे प्लॅटफॉर्म तू वापरतोय सध्या, यूट्यूबवरती पण आहेस तू, फेसबुकवरती पण केलेलं आहेस, तर ते करतानाचे तुझे अनुभव नेमके काय होते? खरं तर याची सुरुवात कुठेतरी प्रसिद्धी मिळवायच्या उद्देशाने नव्हती झाली. झालं होतं असं की ज्यावेळेस कोकणातले काहीतरी इश्यू व्हायचे त्यावेळेस इतक्या लांब येऊन मीडिया पोचायची नाही. 5-6 वर्षांपूर्वी फेसबुक हा एक तेव्हा नुकता ट्रेंडमध्ये आला होता. इंस्टाग्राम आत्ता लोक वापरायला लागलीत किंवा आता इंस्टाग्रामच जास्त वापरतात. पण त्यावेळेस जे मुद्दे होते ते मांडायचे होते आणि ते लोकांपर्यंत जास्त पोचवायचे होते, म्हणून मग फेसबुकचा वापर केला. त्यावेळेस घटना घडली होती इको सेन्सिटिव्ह बाबबद्दलची. म्हणजे ग्रामसभांना ठराव द्यायचे होते की कोकणातली गावं इको सेन्सिटिव्ह करायची, तर ग्रामसभांमध्ये काय मत आहे. तर त्यावेळेस स्थानिक जी लाकूड व्यापाऱ्यांची एक लॉबी आहे आणि डंपर आणि मायनिंगवाल्यांची एक लॉबी आहे, तर त्या लॉबीने एक पसरवलं होतं गावामध्ये की जर इको सेन्सिटिव्ह झाला तर तुम्हाला घरं पण बांधता येणार नाही, तुम्हाला शेती पण करता येणार नाही. आणि ह्या अशा घटना जेव्हा पसरत होत्या त्यावेळेस स्थानिक म्हणून मला कळत होतं की ह्या सगळ्या खोट्या गोष्टी आहेत. तर त्यावेळेस त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी एक व्हिडिओ केला. तो लोकांनी ॲप्रिशिएट केला की कोणतरी बोलतं आहे आपल्या बाजूने आणि खरं बोलतं आहे. आणि हे अशा ज्या वेळेस माझ्या मनातल्या गोष्टी मला वाटायच्या की आत्ता या मांडायच्या आहेत, त्यावेळेस मी उत्स्फूर्तपणे मांडायचो. आणि समाजात कुठेतरी अशी माणसं असतात ज्यांना ह्या गोष्टी पटतात. कदाचित त्यांना आवाज नसतो म्हणून ते बोलत नसतात. कुठेतरी कोकण आणि गाव हे वेगळ्या दृष्टीने मांडायची गरज होती. आणि टिपिकली गाव म्हणजे कोकण पर्यटन किंवा यवा कोकण आपला जसाचा जो ट्रेंड होता त्याच्या पलीकडे जाऊन हे सगळं आता संपणार आहे, हे सगळं आता बघायला नाही मिळणार आहे, ही शेवटची पिढी आहे आणि आत्ता काहीतरी करायचं हे वाचवण्यासाठी असं कुठेतरी ट्रिगरिंग करण्याची गरज होती. तर ते सातत्यानं करणं आणि ह्या गोष्टी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी तुम्हाला काही एक व्हायरल सेन्स तुमच्यामध्ये डेव्हलप करायला लागतो. तर त्याच्याशी मी सहमत आहे की सोशल मीडिया एक पोलराईज कंटेंट देतं, म्हणजे ते तुम्हाला करायलाच लागतात असं, नाहीतर तुम्ही जास्त लोकांपर्यंत पोचत नाही. मग त्याच्यासाठी भाषाशैली विकसित करणं, करंट इश्यूज घेणं आणि त्या करंट इश्यूजला तुमच्या गोष्टींसोबत जोडणं, ह्या गोष्टी करायला लागतात. आत्ता जसं इकॉलॉजिकल लिव्हिंगबद्दल मी आत्ता रिसेंटली एक व्हिडिओ केला होता कोकम बटरचा, तर लोकांना तो खूप आवडला. पण मी त्याच्या सुरुवातीला असं म्हटलं की अमेरिकेकडे अणुबॉम्ब तयार करण्याची ताकद आहे, पण भारताकडे अशी टेक्नॉलॉजी आहे जे तुमचं आयुष्य वाढवू शकतं, लोकांचे लगेच कान टवकारतात. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत बरं, ही टेक्नॉलॉजी म्हणजे फक्त कोकम बटर बनवण्याची नाही आहे, तर बेसिकली इंडियन फूड जे एक मेडिसिनल ज्याला बॅकग्राऊंड आहे ती टेक्नॉलॉजी आमच्याकडे आहे. आमच्याकडे अणुबॉम्ब करून निसर्ग उद्ध्वस्त करण्याची ताकद होती असेल, पण ती आम्ही वापरत नाही. तर ह्या अशा गोष्टी लोकांना, आणि मग आजकाल आपण म्हणतो की एक जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण चाललं आहे. धर्माशी का नको जोडायला पर्यावरणाला? झाडं आणि देवरायत तर सांगतात ना, आपण जे सांगतो रविचंद्र घनावृक्ष नदी गावश्य सज्जना येथे परोपकाराय लोके देवेन निर्मिता, हे म्हणणं म्हणजे निसर्ग पर्यावरण पंचमहाभूत आहेत. आणि त्याला उगाच कुठेतरी मंदिरं बिंदिरं बांधली म्हणून देव पावतो, ह्या खरं तर काहीतरी नवीन तुम्ही काहीतरी आणताय. तर ह्या गोष्टीतून लोकांना खरं इंडिजिनस वर्शिपिंग काय आहे, निसर्ग काय आहे, हाही धर्मातच सांगितलेला आहे आणि तो धर्म पुढे करूनही मांडता येतो. त्याच्यामुळे धर्म आम्ही नास्तिक आहोत, आम्ही पर्यावरणवादी आहोत असं म्हणून उपयोग नाही, आम्ही मानवतावादी आहोत. आमचा विचार माणसांना वाचवणारा आहे. पर्यावरण वगैरे वाचवायला आम्ही नाही हे करत. माझ्या घराला लागतं लाकूड, ते आयनाचं लागतं म्हणून मी ती जपलं आहे. मला नारळ खायला लागतो म्हणून मी नारळ जपलाय. त्याच्यात एक व्यवहारवाद पण व्यवहार भाग आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सॅक्रेड आहेत म्हणून आम्ही जपलाय आणि ते आमच्या कल्चरल त्याचं काहीतरी महत्त्व आहे, इकॉलॉजिकल महत्त्व आहे आणि म्हणून त्या धार्मिक आहेत. तर ह्या गोष्टी कुठेतरी लोकांना न दाखवता फक्त धर्म किंवा जात किंवा जे काही आता पॉलिटिक्स चाललं आहे, आत्ता ह्यालाच घेऊन एक मुद्दा सांगेन की काय झालं की आता गावागावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती कल्ट येत आहेत धार्मिकतेचे. म्हणजे जसं की हे सर मगाशी म्हणाले की अगदी तरुण मुलांनी या निवडणुकीच्या वेळी, गावामध्ये आमच्या एकही मुस्लिम नाही कोकणामध्ये, तरी तो माणूस म्हणतो हिंदू धर्माच्या बद्दल बोलतोय किंवा हिंदुत्ववादी सरकार. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इथपर्यंत पोचतात आहेत कशा? कारण चुकीच्या पद्धतीने गोष्टी पोचायला लागल्यात. तर त्याला योग्य पद्धतीने पोचवण्यासाठी तुमच्यातलीच कोणतरी माणसं उभी राहायला हवीत. तर हा त्याचा वापर आहे सोशल मीडियाचा, जो ग्राउंडच्या माणसाने अशा पद्धतीने करण्याची गरज आहे. पण म्हणजे तुला स्वतःची ओळख इको टुरिस्ट
ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून आवडते की म्हणजे इतर काही कोकणी रान माणूस? माणूस म्हणजे कोकणातला माणूस म्हणूनच आवडते, किंवा रान माणूस म्हणून जे मी म्हणतो की मी गावातला माणूस आहे, दिसायलाही रान माणसासारखाच आहे, तर त्याच्यामुळे मी गावातला आहे. गावातल्या माणसाला आयडेंटिटी मिळायला पाहिजे. पुण्या मुंबईत आल्यानंतर आमच्याकडे गावठी माणसं म्हणून बघताना एक ब्रँड म्हणून लोकांनी बघायला पाहिजे. म्हणजे कोकणातलं माणूस ही लोक, म्हणजे मी सांगतो हापूस आमचा आंबा नाही आहे, उगाच हापूसला भुलू नका. रायवळ आमचा आंबा आहे. आमच्या देवाला रायवळचं पान चालतं, हापूसचं चालत नाही. तर हे रानटी गोष्टी आहेत ज्या इंडिजिनस आहेत, त्या सगळ्या अशा रॉ दिसत असतात. आणि त्या रॉनेसकडे, त्या गोष्टींकडे बघून लोक अट्रॅक्ट व्हायला पाहिजेत. का नको व्हायला पाहिजेत काळ्या रंगाकडे बघून? आमचा वेताळ आणि विठोबा पण काळाच आहे. त्याच्यामुळे ह्या ज्या आपल्या गोष्टी आहेत त्या जपायला पाहिजेत आणि ही आयडेंटिटी व्हायला पाहिजे आपली. आज मी तुमच्यासमोर म्हणून फुल पॅन्टमध्ये आल्यानंतर, गावात आल्यानंतर एक फटकूर घेऊन हाफ पॅन्टमध्येच मी शेती करत असतो. त्यामुळे हे जर तुमचं अस्तित्व जे आहे ते जर दाखवायची जर लाज आपल्याच भारतामध्ये वाटणार असेल तर कुठेतरी तो कमीपणा नको आणि ह्या गोष्टी जपल्या पाहिजेत. खरं आहे. म्हणजे जे रॉ आहे त्याच्यामध्येच सौंदर्य जास्त असणार, याच्यामध्ये काही दुमत नाही आहे. मला वाटतं आपली वेळेची मर्यादा होत आलेली आहे. आपण थोडंसं क्वेश्चन आन्सर सेशन जे आहे ते ओपन करूयात. वेळेची मर्यादा असल्यामुळे आपण एक 3 प्रश्न घेऊयात अशी आयोजकांची सूचना आहे. तर 3 प्रश्न, माईक त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा प्लीज. इथं लेडीज ज्यांना प्रश्न विचारायचे त्यांचं नाव पण तुम्ही प्रश्न विचारताना घ्या, म्हणजे त्यांना थेट उत्तर देणं सोपं होईल. माईक ऑडिबल? Yes, audible. And scary also. आणि त्या दोन्ही फिल्मच्या शेवटाला ह्यांचं नाव आहे. लेट्स कट टू द क्वेश्चन. हॅलो. बायोपिक, पण त्यापूर्वी काही सुरुवात केलेली आहे किंवा काही प्लॅनिंग आहे का? I know maybe this is the first time I'm officially talking about it. So we are working on a docu-series called The Great Indian Illusion, and it's a trilogy. आणि I hope त्याचं शूट आता लवकरच सुरू होईल. So it's one of its kind and first time such subject is being touched in Indian film context. So that trilogy is the next that I'm working on. ओके. अजून कोणी इथे मध्ये प्रश्न किंवा एक मागे लेडीज आहेत? हां प्लीज. Hello. Hi, I have a question for Divya. Divya, what do you think of anti-caste allyship in India? Like, how is it evolving? What have been your experiences? And what are the major do's and don'ts for anti-caste allies? Thank you for asking that question. I think anti-caste allyship in India has started like long ago, like when we have to think about something like Manusmriti Dahan Divas, when Baba Saheb Ambedkar did that, his allies who were also upper caste, Brahmins, they also burned Manusmriti. I think that was also one of the things that we need to document, that, like remember that anti-caste allyship started back then and it's not a new thing. And also, I honestly do not like the word allyship when it comes to a caste, because caste is not the problem of lower caste people or problem of upper caste communities. Caste is not the problem that these communities have created, right? So caste is, so when we say allyship, it becomes it's like, okay, there is a problem of these people. So how I, who is away from this problem, solve this? So that is what allyship turns out to be. So again, like caste is not that, right? Caste is in the air we breathe, in the water we drink, in the panels that we sit at, in wherever like we are at, in newsrooms that are designed. And caste is very much problem of the people who created it. So I don't see it as an allyship, to be honest, and it's something that all of us should actually take up and work towards. Annihilation of caste. And again, I have literally nothing new to say. So I have this tattoo of something that Dr. B.R. Ambedkar said: educate, agitate, and organize. Our ancestors have already told us how to be a
ally or how to dismantle the structures of caste and oppression. We just have to use that roadmap and make it more accessible to everyone right now. Like again, as I said, like if you just read this one essay written by back then Muktabai Salve when she was 14 years old, she wrote this essay called I don't know how to say it in Marathi, but like it's in English translation is The Grief of Mars and Monks. I don't think I am saying it right. Yeah, someone said it. It's available on Savari. And a 14-year-old girl wrote it in between 1848 to 1850s. And it has lots of answers in it and her way of saying it also. Again, like I really rely on the wisdom that the people of the movement have already given. There is nothing new to say. If we just like pick up on the educate bit of educate, estate, organize, I think we'll go a really long way. And I think we have come a better way. Like I don't think 10 years down the line there would be a conference like this happening where we can talk about caste like this. Over like where my friend Grishma earlier spoke about conflict and like caste. All these things were not being spoken so openly like this. There were things happening on the grassroots level. Of course, there was a lot of organizing at the grassroots level, but in mainstream platforms, it was not a thing. But now people are forced to talk about it, and I think that's also a win, even if it's out of whatever diversity, equity, inclusion. It is still a win for us to be able to talk about it. Last question. मेरा नाम रामदास है सर. मेरा सवाल अतुल सर से है. दूसरे किसी को तो मेरा सवाल अतुल सर से है. वरुण सर ने भी कहा कि अगर आप स्क्रिप्ट सुनाने के लिए जाएंगे कहा तो आपकी पर्टिकुलर जाति देखकर आपको निगलेक्ट किया जाता है या सुनाई नहीं जाती. ये सारी बहस जाति के नाम पर ही हुई. लेकिन मुझे अतुल सर से पूछना है कि आजकल एजुकेशन में भी टीचर हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो, जाति भेद के नाम पर ये तो सब सारी जगह चलता है. न्यूज़ में भी चलता है, यानी न्यूज़ रूम में भी चलता है. सर जैसे बोले कि फिल्म इंडस्ट्री में भी चलता है. ये सारी जगह चलता है. हम सिर्फ बहस करते हैं. लेकिन मेरा अतुल सर से सवाल ये है कि ये हम इससे छुटकारा कैसे पाए. आप इसका जवाब ये भी देंगे कि अगर जब तक जाती है तब तक ये चलता रहेगा. लेकिन मुझे इस जवाब से संतुष्टि नहीं मिलेगी. मीडिया में, इंडस्ट्री में और सारी जगह पर ये नहीं होने के लिए आपके पास ऐसा क्या सुझाव है जो मैं सुनना चाहता हूँ. थैंक यू. In addition to that, just a small question to Divya. Like whenever we are talking about caste and all of that, we are talking about how we have to give spaces. We need to be more quote unquote inclusive in that sense. But like in the previous conclave, Sudipto Mandal came and he said that when he sends people to capture atrocities or violence, he would rather not send his journalists to the person who has faced the oppression. Rather, he would send. So the narrative has to change. The oppressor has to be held accountable in that way, and not go to the victim and say कि कैसा लग रहा है आपको. मतलब obviously कैसा लग रहा है, बुरा नहीं अच्छा लग रहा है. So how do you look at it, and how do you think that also is a step towards annihilating caste? Because like we've been talking about again, as you said, allyship for a really long time, and that is how the movement has also been perceived by the Savarnas, that we are supporting, but you are also the part of the problem. So you can't just be supporting, you have to be completely immersed into it, because caste is as much yours as it is ours. Okay. So yeah. दिव्या, पहले आप अपनी बात करेंगे. बहुत छोटा सा जवाब है उनकी बात का. मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जाति कैसे ख़त्म होगी. ना तो मेरी इतनी समझ है, ना मेरा इतना कोई तजुर्बा है कि ना मैं अपने को इतना दूरदर्शी गांधी और उनकी तरह से समझता हूँ, बुद्ध की तरह की कोई इस तरह के इतने बड़े मास मूवमेंट में इतनी बड़ी व्यापक रूप से फैली हुई किसी समस्या पर कोई एक रास्ता दिखा पाएँ.
व्यक्तिगत तौर पर एक छोटी सी चीज़ जो हो सकती है वो ये कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत रूप में, अपने आचार विचार में क्या कर सकते हैं। हम उस चीज़ का विरोध करें, हम उस चीज़ को प्रैक्टिस ना करें, ये एक चीज़ हो सकती है जो व्यक्ति दर व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, अगर वो प्रैक्टिस करता है इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली, बहुत सजगता से, बहुत जागरूक तरीके से कि मैं अपने जीवन से जाति की समस्या को थोड़ा दूर रखूँगा, इस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि वो एक तरीका हो सकता है बस। लेकिन ये भी कोई फुल प्रूफ तरीका जाति की समस्या को ख़त्म करने का है, वो ऐसा नहीं है। एक लाइन इस मामले में मुझे याद आ रही है तो मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। 1937 में प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ में पहला वो सम्मेलन हुआ 1937 में, और मुंशी प्रेमचंद उसके वो थे अध्यक्ष बने, उसकी सदारत कर रहे थे। तो उनका बहुत लंबा एक भाषण है पूरा कि हमारे जो कवि थे, हमारे जो लेखक थे, वो भक्ति से शुरू हुए, वो भगवान की भक्ति लिखते लिखते, लेकिन वहाँ से बहुत चीज़ें आगे बढ़ी, कविता नई, दुनिया बदल रही है, कम्युनिज्म का भी असर था उस समय, बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी आसपास लोगों के। तो अब क्या साहित्य भी अभी फिर से वही जो 400 साल, 1000 साल, 500 साल, 700 साल पहले वो राम कृष्ण और इनकी भक्ति लिखता था, वो अभी भी वही काम करेगा या उसको भी बदलना है? तो उन्होंने उस भाषण में एक 4 लाइनें कही हैं कि जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद, बुद्ध, इन सब लोगों ने, इनका विज़न बहुत बड़ा था कि कोई भी जो हमारा समाज, जो आदर्श समाज होगा, जिसकी हम रचना करना चाहते हैं, जिसका हम निर्माण करना चाहते हैं, वो समतामूलक हो, बराबरी पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो। ये इन सब लोगों की कल्पना थी, और आज भी कमोबेश पूरी दुनिया पर इन्हीं 3-4 शख्सियतों का सबसे ज़्यादा असर दिखता है, क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम का हो, बौद्धिज़्म का हो, हिंदू धर्म। तो ये सारे लोगों का जो कोर कॉन्सेप्ट आइडिया था कि ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे लोगों के बीच में एक किस्म की समानता, बराबरी ये हो, पर किसी को भी वो अचीव करने में सफलता नहीं मिली, बल्कि वो दिन पर दिन वो खाई बहुत गहरी होती गई है, वो लगातार बढ़ती गई है। तो क्या वो एक किस्म का मतलब ऐसा आइडिया है जिसको हासिल नहीं किया जा सकता? क्योंकि हर आदमी अलग है, हर व्यक्ति अलग है, सबकी सोच अलग है। वो इन्हीं 3-4 जो मेजर धर्म पूरी दुनिया माने जाए, इन्हीं के मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का दावा करते हैं, उनके नाम पर हिंसा, खून खराबा भी करने को आमादा रहते हैं। पर क्या वो जो कोर वैल्यूज़ थी 3-4-5, न्याय पर, समता पर, बराबरी पर, सम्मान पर, उसका पालन कर पा रहे हैं सारे लोग? उसका जवाब है नहीं शायद। तो ये एक किस्म की एक अंतहीन लड़ाई है कि कभी कोई ऐसा आदर्श समाज बने। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत निजी राय बन पाई है इतने अपने सोच में। दिव्या, your answer? Yeah, I'll just answer in a line. The report that Mr. Atul was talking about earlier also, the Oxfam News Laundry report, one of the key highlights of this report, I just want to read it out, of 218 leadership positions of the surveyed content of media outlets they took, out of 218 leadership positions, 191 were occupied by people from general category, and none of the mainstream media houses had people belonging to SC/ST categories, like none. So I think that again, like that's the point about who tells our stories matters, right? To answer your question, like definitely it makes sense to have certain kind of reportage on cases like atrocities, because it also takes a toll on you as a reporter. Like if you are going to the field, and we had a whole panel on conflict, like I really wanted to ask them what does it like feel like to do this work. But again, I think my friend Grishma also talks about it a lot in her work. There is no reportage on caste in the first place. Like nobody is reporting caste other than if it's like an extreme brutal, atrocity case. Like you have to dehumanize people to an extent that you'll get attention from that. So even if that is being covered
we are like, oh, okay, at least someone is talking about one thing, at least. So I think there is a long way for us to go, like for these leadership positions to like break down and where the numbers are reversed or even at least equal. Right? Why is 3% or like top 15% population of this country is holding over 95% of leadership positions in newsrooms, whereas 85% of this Indian population is coming from marginalized communities, is nowhere to be seen in newsrooms, right? I think that also is something we need to question and talk more about caste. We just have to keep talking about. Like I hear this question कि अरे यार तुम कहीं भी जाते हो हर चीज़ में कास्ट एंगल क्यों लेके आते हो? मतलब मैं नहीं लेके आ रही हूँ कि है हमारे नाम में है. Like first thing people ask, especially in Maharashtra, people will ask कि हाँ तुम्हारा नाम दिव्या है उसके बाद क्या? Like what? I mean, it's very simple. Like Maharashtra, I've noticed this. Like they want to know your full name to be able to locate you. So it starts from there. Like, you know, the caste is in our own houses, in our relationships, in the love, in the friendship, in the food that we eat. The moment we recognize that, then only we can like talk about annihilating or like building, or like forging solidarities also. Having said that, I again want to re-emphasize on the fact that our ancestors have done this work. Our mothers and grandmothers do this work on daily basis. They have survived through injustices. They have survived through this on daily basis with their own community wisdom, and I think we need to go back to that and like build on that. Yeah. So there is just one thing I want to add to this whole discussion, since this discussion about exploring media for raising voices, and Atulji and Prashant were discussing about how democratization of digital space is helping us all. See, मेरी बात बताऊं तो मेरी दोनों फिल्में या उसका ट्रेलर कभी रिलीज ही नहीं होता अगर यूट्यूब नहीं रहता. I have to be very honest about it. But to keep that free, Kunal had his own fight, a legal battle, which you must have heard of, that eventually we won, that the IT Amendment Act was withdrawn. But one thing we all need to understand, that social media operates on individual level. If we have to keep them free, if we are really willing them to be free, if you really are willing that we people keep talking, keep making films, keep releasing that without being afraid of anything, then the individual voice will matter a lot. If this kind of suppression ever happens, ever comes, because institutions are very easy to be corrupted, individuals cannot. So your collective efforts to keep them free, keep them all platforms available, we need you to be very much vigilant about it and keep talking about it and help us keep talking and make it free. Thank you so much. That's one I wanted to add.